Good morning, brothers and sisters. This morning. Everybody have to double speed your brain. Okay, so I'm going to pray right now. Father, let's come before you and ask for the great power of the Holy Spirit come upon us right now and penetrate. Also, fill us up all the way up. Inside out, upside down, all the way, oh God. This is such an important teaching, so I ask that you will double, triple our understanding, spiritual wisdom and understanding right now, in the name of Jesus. Lord, outpour right now, oh God, in the name of Jesus. Amen. Okay, now, we all remember this picture. आप लोग ये चित्र को जानते हैं? What does it talk about this picture? ये पिक्चर से क्या आपको समझ आता है? The thief in the night. Okay, रात को आने वाले चोर के बारे में. And Jesus used this as his parable. यीशु मसीह इसी उदाहरण को इस्तेमाल करके कुछ बातें समझाए. So that we know that that I will come at the day and the hour and as a thief. मैं आऊंगा ऐसे समय में जैसे चोर रात को आता है. It's not to all the Christians, only to those who are dead. ये सभी मसीह लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो लोग तैयार नहीं हैं उनके लिए है. Dead churches, and also those are under the great deception. जो कलीसियाएं जो मरे पड़े हैं या धोखे में पड़े हैं. So Jesus used, for example, in the book of Revelation about those 7 churches. He talked about the church of Sardis. Remember, church of Sardis, you are dead. You thought you are alive. You are dead. यीशु मसीह ने वो 7 कलीसियाओं से प्रकाशित वचन के अंदर. Yeah, so he give the warning, the same warning to them, and then he give the same warning to church of Laodicea, which is the worst. The end time profile, the church of the end time, there will be like Laodicea, such a deep deception. और 7 कलीसियाएं जो प्रकाशित वचन के अंदर लिखा हुआ है, जैसे सरदेश के कलीसिया, लाउदिकिया के कलीसिया, इनको बताते हैं आप लोग बिल्कुल धोखे में सोए पड़े हो. Church of Laodicea, Jesus even was standing outside the door knocking them in. लाउदिकिया कलीसिया के बाहर खड़े होकर यीशु मसीह खटखटा रहे हैं. So it's so that they only want the Christian religion, they don't want the Lord. वे इतना मरा है कि वे मसीह धर्म को चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते. Okay, so and then he said, I will come as a thief. यीशु मसीह उनको कहते हैं मैं रात को चोर के समान आऊंगा. And then you saw the picture. और फिर आपने yeah, I'm gonna do like I'm gonna put a fire on your clothes and you'll be caught on fire while you're sleeping and dead and you will be naked. और मैं तुम्हारे कपड़ों में से आग लगाऊंगा, तुम एक कदम तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं आ गया हूँ. And basically he said, when you are totally naked, that time shame on you. उस समय में तुम्हारे कपड़ा इतना जल जाएगा तुम बिल्कुल नंगे हो जाओगे. It's a severe warning to these type of church and the Christian, but we have to understand that our previous understanding is wrong. That the day and the hour that the Son of Man come, you will not know. That is the wrong interpretation. हमारे पुराना जो सोच है जहाँ पे कहते हैं जब परमेश्वर का पुत्र जब आएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा, वो गलत समझ है. Because church, a lot of teachers they use that verse that even tell you, you don't have to read book of Revelation, you're not going to understand it. और कुछ लोग सिखाते हैं आपको प्रकाशित वचन सीखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा. Yeah, and then when they listen to the end time teaching such like this, they will say, no, when you talk about day of trumpet, this, that, the Lord said, the Bible said, the day and the hour we will not know, and we will never know. No matter how you study, you will never know. और वे इस प्रकार कहते हैं प्रभु ने खुद कहा है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है. Okay, I don't want you to have that kind of misunderstanding because you don't know, then nobody will know. आप उस तरह के गलतफहमी में मत बैठिए. And the reason why,
these teachings are here is because God wants us to know. He wants us, the children to know, the children of God to prepare, and not just prepare for ourselves, and also prepare others to know. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को तैयार रखें और हम जाने और बाकी लोगों को भी ये बात समझाएं. And that is the reason why in the book of Revelation there are double portion blessings. और इन्हीं लोगों के लिए प्रभु का वचन प्रकाशित वचन के अंदर लिखा है दुगना आशीषें मिलता है. For those who read the book of Revelation, and also for those who hear. जो लोग प्रकाशित वचन के भविष्यवाणी पढ़ते हैं और सुनते हैं उनको दुगना आशीषें मिलने के बाद लिखा हुआ है. Now further, that kind of warning to the servant, to the steward of God. और इसी प्रकार का एक वार्निंग परमेश्वर के उस दास के लिए भी दिया हुआ है. Jesus further said, "Who then is that faithful and wise steward?" कौन है ऐसा वफादार और बुद्धिमान सेवक? These are the wise virgins, the 5 wise virgins. ये वही 5 कुंवारियों समान हैं जो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है. Okay, and then the other side of the coin, the other side is the evil. But if the other type of servants are this type of servants. दूसरे तरह का जो सेवक है वो इस तरह का है जैसे दिखाया जा रहा है इधर. Those are the evil servants. They said, "Okay, my Lord is delaying His coming," and then start to beat the men servants and maidens, and to eat and drink and to be drunken. वे दुष्ट दास हैं. वे प्रभु के आगमन बहुत देरी होंगे करके दूसरे दासों को वे मारने पीटने शुरू कर लेते हैं. To them, there's a very severe warning and punishment. और उनके ऊपर बहुत बड़ा एक परमेश्वर का एक वार्निंग दिया हुआ है. He will even when He comes, He will come in a day when they look for Him not, and in an hour they are not aware. और उनके लिए यह है इस तरह से दुष्टता करने वाले दासों के सामने प्रभु एकदम ऐसे समय में आएंगे जो इनको पता नहीं है. Again, in the future, day of the trumpet, when He comes, at the day and the hour that nobody can predetermine, nobody knows, that is the day of trumpet. He will come. और ये तुरही फूकने के इस समय में जो इन लोगों को वो समय मालूम भी नहीं है वे तब प्रभु आएंगे. And these time, the servants of God, especially the main leaders, are very, very important. Okay, if you are main leaders, you have to listen especially very carefully. इस समय सारे अगुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, स्पेशली अगर आप सबसे बड़े अगुए हैं. Because why Jesus said that is because after Peter said, "Hey Lord, when you say those parable, are you saying to us or to everybody else?" Then Jesus go and tell him this parable. और यीशु मसीह से ये लोगों ने सवाल किया, क्या ये बातें आप हमारे लिए बोल रहे हो या बाकी लोगों के लिए? तो प्रभु उन्हें बड़े अगुओं के लिए ये वाला बातें प्रभु ने कहा. So it means like at the end time there will church there will be like a church who work with the enemy, who work with the antichrist, who really do not hold the line. और देखिए ये उस तरह के लोग हैं जो शैतान के साथ सहयोग देते हैं या अपने स्थान को वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं. Okay, these are the faithful and wise stewards. The faithful and the wise steward. ये इधर देखिए ये वफादार और समझदार सेवकों के बारे में भी लिखा है. They hold the line until Jesus comes back. और वो वफादार दास वे यीशु के आगमन तक अपने जगह को बिल्कुल वहां पे खड़े हैं. No matter how difficult the situation is, चाहे परिस्थिति कितनी भी बिगड़े हुए हो, they do not give in at all. वे उस तरह के बातों में डगमगाते नहीं हैं. And then Jesus said, "When I come back, I give you the reward. I will make you the rulers." और इस तरह के अच्छे दासों को प्रभु आके प्रतिफल भी देते हैं. But for those who start to beat his mate, his fellow servants and eat and drink, in Bible where it said, to eat and drink, that means you fellowship with someone. So at that time, these guys,
evil servants, they will start to give in. Why would they give in? Because under majorly two things. One is the persecution. They start to give in. Number two is because of popularity. देखिएगा इस तरह के ये दुष्ट दास एक दूसरे को मार डालते हैं और वे वो दूसरे अलग अलग प्रकार के गलत चीजों में पड़े हुए होते हैं क्योंकि इनके इस तरह के तरीकों को लोगों के तरफ से शाबाशी भी मिलता है. So imagine that you are a church leader or a senior, you are church pastor, you are senior leader of this, let's say 10,000 members church. ये सोच कर देखो अगर आप एक बहुत बड़े 10,000 लोगों के कलीसिया का पासवान है and then and you decided that you're going to support President Donald Trump. और आप ये डिसाइड कर लिया कि मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाला हूं. And you decided that you're going to tell your congregation, the members, to vote, according to Bible value. और आप अपने कॉन्ग्रेगेशन को कहते हैं वचन के अनुसार आप वोट दो. Okay, and then there it comes the LGBT same-sex marriage issue. और आप तब वहां पे उस तरह का एक समलैंगिक बातें और उस तरह के जो चुनाव के मुद्दे हैं वो सब आ गया. Right, and then one party is pushing for that all the way. और वो दूसरा पार्टी जो है उस तरह के गलत चीजों के लिए बहुत सपोर्ट दे रहे हैं. If you do not tell your church members to vote based on Bible value, then these people, these kind of church leaders, they don't do it because they know that once they open up their mouth and tell them to vote based on Bible teaching and what Bible said, then they will lose half of the members. और देखिएगा इनको ये बताना बहुत जरूरी है कि वचन के अनुसार वो वोटिंग करें. And then the offering come in, like all of a sudden you don't have enough money to run the church. अगर इस तरह का एक स्टैंड अगर पासवान लेते हैं आधा शायद कलीसिया के लोग चले जाएंगे तो हो जाता है. And lose the popularity. और वो व्यक्ति का वो पासवान का लोगों से जो शाबाशी मिलता है वो कम हो जाता है. That happened to quite a few churches in the United States. During the presidential campaign. और अमेरिका के अंदर कुछ चर्चेस के साथ ऐसा हुआ है 2 years ago. 2 साल पहले. They paid the price. They paid the price. वे उस तरह का एक कीमत चुकाना पड़ा. Okay, but for those who just work with the evil darkness power. लेकिन जो लोग शैतान के शक्तियों के साथ सहयोग देते हैं, okay, they what I want to say is this. These churches, these Christians who do not choose to stand with the Word of God, they will start to fellowship with the world, and then they will become together with them. They will start to beat up the God's main servant. जो लोग परमेश्वर के वचन के लिए नहीं खड़े होते वो अंधकार के लोगों के साथ साथियों के साथ सहयोग करने लगते हैं. वे फिर उन लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के दासों को परमेश्वर के लोगों को परेशान करने लगेंगे. So they will start to stand with the world government together to persecute the real Christians. वो दुनियादारी और दुनिया के गवर्नमेंट के साथ मिलके परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के कामों के ऊपर वो अपना सताव करने लगते हैं. Last year in California we fight LGBT bill. पिछले साल हम कैलिफोर्निया में LGBT बिल के खिलाफ हम लड़े थे. There were and that is going to persecute churches big time. और वे लोग कलीसियाओं के ऊपर बहुत ज्यादा सताव और परेशान करने लगे. I was so surprised to see a long list of churches
that stand together with the enemy. और मैंने ऐसे बहुत सारे चर्चेस के नाम देखा जो इस शैतान के योजना के साथ खड़ा है. When that congressman, in the hearing, he said that we have the, support, endorsement from all these churches, 60 different churches. कांग्रेसमैन इस बिल के लिए बोल रहे थे. उन्होंने कहा देखो 60 करीब कलीसियाओं का सपोर्ट हमारे पास है. Even some of the Baptist church, supposed to be the most conservative church. और कुछ बैप्टिस्ट चर्च भी इस बात में उनको सपोर्ट कर रहे थे. They chose to stand together with the enemy to persecute the real churches. और वे शैतान के लोगों के साथ खड़े होकर असली कलीसियाओं को सताने लगे. I'm telling you guys, it's happening now already. So we are approaching the end time very soon. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में यही बात हो रहे हैं. इसका मतलब है कि अंत के समय की ओर हम आ पहुंचे हैं. And that's the reason why Jesus, said the punishment is very severe. इसलिए यीशु ने कहा ये दंड बहुत बुरी तरह से आपको दंड मिल सकता है. Basically, he's saying that when I come, I will cut you into half. और प्रभु कहते हैं जब मैं आऊंगा तो मैं 2 टुकड़े कर दूंगा. Because this is worse than the enemy. देखिए क्योंकि ये लोग शत्रुओं से भी बदतर है. Okay, let's move on. आगे बढ़े. Okay, now this is a very, very happy theme. One of the very happy theme of the Day of Trumpet. ये तुरही के दिन का सबसे खूबसूरत या खुश करने वाली एक बात है इसमें. Which is the coronation ceremony of the king. That means to put the crown onto the Messiah king. और मसीहा के राजा बनने का राजाभिषेक का वो समारोह है ये. Now you see the crown here. ये देखिए इधर एक मुकुट आपको दिख रहा है. Jesus is waiting for that moment in the heaven also. He's sitting at the right hand of God. He's not sitting on his own throne yet. यीशु मसीह स्वर्ग में इस समारोह के इंतजार में है. अपने राज्य सिंहासन पर बैठा नहीं है. He is waiting for us to join him. यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं कि हम भी उनके साथ मिल जाएं. And to celebrate together when his crown as the King Messiah. और यीशु मसीह का राज्याभिषेक के लिए हम भी उनके साथ जुड़कर इसमें आनंद मनाएं. That is one of the reason why we celebrate Day of Trumpet. और इसीलिए ये कारण है कि हम ये तुरही के ये पर्व को मनाते हैं. 2 Samuel said that when King Solomon was crowned as the king. दूसरे शमूएल 5:3 में लिखा है जब सुलेमान राजा बन रहे थे. Okay, now they made the league with them, and King Solomon made the league with that means the you play your legions. दाऊद जब राजा बन रहे थे वे हेब्रोन के लोगों के साथ एक संबंध बनाया. These people, they played the legion with King Solomon. वे लोग सुलेमान राजा के लिए भी राजपद को तैयार किया है. One of the ceremony, of crowning the king is for these people, God's loyal, faithful people, to play the legions onto the king. और ये राजाभिषेक के समारोह का एक महत्वपूर्ण एक समय है. जो लोग उनके प्रति बहुत वफादार हैं वो अपने वफादारी को वहां पे दिखाते हैं. Okay, now the first king also mentioned some of the details here. They blew the trumpet, they blew the shofar. और पहले राजा के किताब पहले अध्याय में ये कुछ बातें जो होता है वो लिखा हुआ है. वो तुरही फूका. And all people, they shouted out, God save King Solomon. और चिल्लाने लगे कि परमेश्वर राजा सुलेमान को बचा के रखे. And the sound, the joy, and the teruah, is so big that it was heard miles away. और वे लोग इतना चिल्लाने लगे, आनंद करने लगे और उसका आवाज बहुत मीलों तक दूर तक सुनाई दिया. And the earth was even almost split. और मानो पृथ्वी फट जाए उस तरह का उतना आवाज. So this is the great joy, and that's why the young teruah Day of Trumpet.
Then of trumpet, yam teruah also means you break out with a great pride, great joyous sound, and also great, blast of the shouting out of the teruah, the trumpet all together. यूं तेरुआ के इस दिन के अंदर ये भी इसका मतलब निकलता है लोग बहुत ही ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हैं. And then the priest and the prophet, they anoint king in Gihon. याजक और भविष्यवक्ता मिलके राजा को गिहोन नाम के जगह में राज्याभिषेक दिया. And so after King Solomon was anointed, and then King Solomon sat on the throne of the kingdom. तब सुलेमान राजा उनके सिंहासन के ऊपर बैठ गए. So this is the foreshadow, a prophetic shadow, what's going to happen in the real event of the day of the trumpet, one day when Jesus is sitting on his throne and crowned to be the King of the Kings. यीशु मसीह भी अपने सिंहासन में बैठ के राज्याभिषेक होगा, तब क्या होने वाला है उसका मानो एक परछाई यहाँ पे हमें दिखाई देता है. So again, first king, the same thing, and blew the shofar, and they shouted out, God save King Solomon, God save King Solomon. और ये लोग ऐसे चिल्लाने लगे, परमेश्वर सुलेमान राजा को बचा के रखे. They clapped their hands. वे अपने ताली बजाते हुए, okay, and put for 2 King chapter 11, he brought forth the king's son, that's been Solomon. दूसरे राजा 11वें अध्याय में लिखा है राजा के बेटा यानी सुलेमान को आगे लेके आया and put the crown upon him और उनके सर पे मुकुट पहनाया and gave him the testimony and they made him king. और उनके हाथ में परमेश्वर के वचन को सौंप दिया और उन्हें राजा ठहराया. So all the people at that time, they just clapped their hands and shouted. ताली बजाने लगे और चिल्लाने लगे. Okay, that is also what I'm going to do when that real event happened. जब वो असली समारोह होंगे स्वर्ग में तब भी ऐसे ही कुछ बातें होने वाला है. Now Psalm 50, he says that okay, he may judge his people. भजन संहिता 50 में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को न्याय दिलाएगा. And gather my sins together unto me. मेरे संतों को मेरे पास लेके आए. And those that made a covenant with me. और जो लोग मेरे साथ जो वाचा बांधा है. These are his faithful people. ये परमेश्वर के वफादार लोग हैं. His loyal people. उनके वफादार लोग हैं. And one of the thing the king will do is like when his throne is sit and the king and the throne together my people in front of me. और जब वे राजा बनेंगे वे कहेंगे मेरे अपने लोगों को मेरे पास सम्मिलित करें. And we pay the legion to him forever. और हम अपने वफादारी राजा के प्रति हमेशा के लिए घोषणा करेंगे. And he will execute his judgment. और वे अपने न्याय सुनाएंगे. As I told you that the fifth book of gospel is the book of Revelation. और जैसे मैंने कहा सुसमाचार का 5वां किताब है प्रकाशित वचन. Because only in the book of Revelation you see the judgment. और क्योंकि प्रकाशित वचन के अंदर हम न्याय देते हुए देखते हैं. Not just the judgment of his enemy, but also the judgment of his own people. और उनके शत्रुओं का ही न्याय नहीं, लेकिन उनके अपने लोगों का भी न्याय होने की बात. Here I want to share with you that do not be afraid of the judgment of our God. और हमारे परमेश्वर के न्याय को आपको डरने की जरूरत नहीं है. Judgment, from God to his children is positive. और परमेश्वर के न्याय अपने लोगों के लिए हमेशा सकारात्मक होता है. It's not negative. वो नकारात्मक नहीं होता. Basically, for example, the concept of judgment is like this. We have so many clocks in the world. न्याय के बारे में सिखाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ हमारे दुनिया भर में अलग-अलग घड़ियाँ होता है. Some are faster, some are slower. कोई बहुत ज्यादा रफ्तार में चलने वाली घड़ियाँ हो सकता है, कोई धीमी से. So who do you know like which one the most correct, accurate? और कौन सा आपको पता चलता है कि सबसे सही वाला कौन सा है? So everybody
everybody has taken his watch or clock, go to the clock in Greenwich, and then and everybody according to the absolute standard, absolute just holy judgment. सभी लोग अपने अपने घड़ियों ये ग्रीनविच नाम के जगह में पहुंचते हैं और उसके अनुसार अपने घड़ियों को बराबर कर देते हैं. That is the only judgment standard. और वही है समय के नाप के लिए एक स्टैंडर्ड बना रखा है. Because judgment belongs to Jehovah. क्योंकि यहोवा का है न्याय दिलाना. Our God. हमारा परमेश्वर. Only his judgment is righteous and just. उन्हीं का न्याय वो सही होता है, वो धर्म से भरा होता है. So we are told we don't even judge ourselves. और हमें ये बताया जा रहा है कि हम खुद भी सही से न्याय नहीं दे सकते. So we should get our watch, go to that perfect judge. हम भी अपने अपने घड़ियों को लेके वो परिपक्व वो न्यायी के पास जाना है. And that judge will say that, oh, you are one of 100. Let's say this. You are 1% slower. और तब शायद ये न्यायी बोलेंगे, देखो तुम 1% जो है थोड़ा धीमा है. Or you are like 2 minutes faster. और या कहेंगे कि 2 मिनट तुम ज्यादा फास्ट हो. Okay, now you have to go a little bit slower, and you have to go a little bit faster. You have to go 2 minutes slower. इन दोनों में से एक this judgment. या एक को कहेंगे कि तुम्हें थोड़ा 2 मिनट स्लो चलना है, दूसरे को कहेंगे 1 मिनट तुम्हें ज्यादा स्पीड में चलना है. So the judgment is good because it will make us holy as our Father is holy. उनका न्याय बिल्कुल सही निकलता है क्योंकि वो परमेश्वर के हिसाब से करता है. And David understands that. दाऊद राजा इस बात को जानते हैं. So he knows that the Father's heart of judgment is to make us holy. और उनको पता है पिता का हृदय है कि हमें पवित्र बनाए. His heart is so soft. उनका हृदय हमारे प्रति नरम है. So he said, I wait upon you on the road that you are executing your judgment. I'm sitting here. I'm waiting for you to come and judge me and make me holy again. और हमें ये कहना है कि प्रभु मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ कि आप आए और मुझे फिर से 100% पवित्र बनाए. But his judgment to his enemies, those who hate him, is very, very horrible. और लेकिन उनके शत्रुओं के लिए यही न्याय बिल्कुल बुरी तरह से बुरा हो सकता है. Book of Psalm is also full of prophecies. भजन संहिता का किताब बहुत सारे भविष्यवाणियों से भरा है. Now, David wrote most of the book of Psalm. दाऊद राजा भजन संहिता का ज्यादातर किताबों को लिखा है. And Jesus said, David is a prophet. यीशु मसीह भी दाऊद को एक भविष्यवक्ता के रूप में मानते हैं. He knows so much things about God and God's kingdom and his. वे परमेश्वर के और प्रभु के राज्य के बारे में बहुत से बातों को जानते हैं. He even see Jesus, sitting in front of him, either sitting or standing in front of him together with Father God, Jehovah. वे इतना तक भी देख लेते हैं कि यीशु मसीह को यहोवा के साथ राजा के रूप में खड़े होते हुए. Yeah, he said, my Lord, I saw my Lord with standing in front of me with Jehovah. और वे इस प्रकार कहते हैं, मैं अपने प्रभु को यहोवा के साथ खड़े होते हुए देखा. Yeah, so and he saw the coming of Messiah. और उन्होंने मसीहा के आगमन को देखा. And the future crowned. और भविष्य के मुकुट को भी उन्होंने देखा राजा के सर में रखने वाला. So God showed him so much visions, and that's how he's able to write down all these things in the book of Psalms. परमेश्वर ने उनको बहुत से दर्शनों को दिखाया, इसीलिए वो भजन संहिता को इस प्रकार लिख पाया. So that's why Jesus, he said that the book of Moses, the book of Psalm, and book are also testifying again about me. इसीलिए यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मूसा के किताबें और भजन संहिताएं मेरे बारे में भविष्यवाणी कहते हैं.
So this is Psalm 98 is one of the example. भजन संहिता 98 इस तरह का एक उदाहरण है। Make a joyful sound with the shofar. परमेश्वर के सामने तुरही के साथ एक आनंदमय एक आवाज से निकालें। Before the Lord the King, see this. परमेश्वर के सामने वे राजा हैं। And at that time, God will make all the oceans roar. उस समय समुद्र भी चिल्ला उठेंगे। And all the animals, whoever the breath in the world, they will always shout it out also. पृथ्वी के सारे जानवर भी आवाज करेंगे। And on the ocean there will be big waves, so God will make the ocean clap their hands. और परमेश्वर उस समय समुद्र को भी ताली बजाने के लिए मजबूर करते हैं अपने लहरों के द्वारा। Okay, and then for he comes to judge the earth with righteousness. वे पृथ्वी को न्याय दिलाने आते हैं धर्म के साथ। So this is the glorious theme that's going to happen when Jesus is crowned. यीशु मसीह का राज्याभिषेक के समय में होने वाले बड़ी-बड़ी बातें हैं ये जो लिखा है। Psalm chapter 2 says this, I have set my king, and also not just that, he said that thou art my son. See that? देखिए भजन संहिता दूसरे अध्याय में परमेश्वर कहते हैं मैं सिय्योन पहाड़ के ऊपर अपने राजा को मैं बिठाऊंगा जो मेरा पुत्र है। So it's very very early in the history, it's already pre-written. ये देखिए इतने पुराने समय में ये बात लिख कर रखा हुआ है। See the capital letter of S. ये सन या बेटा करके शब्द है उसका कैपिटल लेटर को देखिएगा। So what's saying here is Son of God now become king. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का पुत्र यहाँ पे राजा बन रहा है। And Genesis 49 also also said that the scepter shall not depart from Judah. और उत्पत्ति के किताब 49वें अध्याय में लिखा है राजदंड यहूदा से कभी भी ना हटेगा। The scepter, is the symbol of his authority and kingship. राजदंड राजा के हाथ में उनके अधिकार का एक निशान है। And once again, what would he do when his son, crowned as the king? जब वे राजा बनते हुआ होता क्या है? Shall gather his people. और अपने लोगों को अपने पास लेके आएंगे। That is another reason why the rapture has to happen on day of trumpet. और देखिए ये ऐसा एक कारण हमें दिखाता है वो तुरही के दिन ही रैप्चर होना है। Because this is the day he's going to be crowned as the king. क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन यीशु मसीह का राज्याभिषेक होंगे। But before he's ready to take up his kingship, he needs to gather his people. लेकिन वो राज्याभिषेक के तुरंत पहले उनको जरूरत है कि अपने लोगों को अपने पास लेके आए। And there is, like I shared with you yesterday, on the 7th trumpet on the 7th, the last trumpet of the 7th trumpet, and before the first bowl of the 7th bowl was poured out. इसलिए मैंने आपको कहा वो 7 तुरहियों के बाद और आखिरी जो कटोरा जो उमड़ा जाएगा उसके पहले ये काम होना है। And then at that time Apostle Paul said that the Lord, Jesus, Yeshua, he himself will descend from the heaven, and what would happen at that time for those Christians already, died in the grave. इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं यीशु मसीह खुद उस समय उतर के आएंगे और जो लोग सोए पड़े हैं कब्र के अंदर is that he will start to call out the name. और उनके नाम को प्रभु पुकारेंगे। Okay, he will say Johnson, Pastor Johnson. और वे बोलेंगे Pastor Johnson, take me, for example. Okay, and then how would that people hear the voice? और ये लोग जो मुर्दे पड़े हैं वे प्रभु के आवाज को कैसे सुनेंगे? Okay, he will not call out wrong people because the Bible told us he knows who belongs to him. और देखिए प्रभु का वचन में लिखा है प्रभु जानते हैं कौन उनका है। He come and gather to those who belong to him, those who do not belong to him, he's not taking them away. जो लोग प्रभु के अपने लोग हैं उनको प्रभु
के ले जाएंगे, बाकी लोग रह जाएगा। Okay, I tell you a secret right now. मैं आपको एक भेद की बात बोलता हूँ, Because after the Pentecost, we all have the Holy Spirit. The true believers all have the Holy Spirit dwell inside of us. फिर पेंटेकोस्ट के दिन के बाद जो से विश्वासी हैं उनके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। And Bible said the Holy Spirit dwell with us forever. और पवित्र आत्मा हमारे संग हमेशा के लिए रहे हैं। That means even when we die laying on the grave, in the grave, the Holy Spirit is still there guarding us. और देखिए हम जब कब्र में पड़े भी हैं तब भी मानो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। Until the day of trumpet day that Jesus showed up in the middle of the air and said, for example, check me. और जब वो तुरही फूका जाएगा तब वो आवाज निकलेंगे तो प्रभु उनको उठाएंगे। And then the angel will check that yes, he has got Holy Spirit right here. Get up. और जो स्वर्गदूत You have Holy Spirit. Get up. And you have Holy Spirit. Get up. और देखिए उस दिन ये स्वर्गदूत आएंगे और कहेंगे तेरे पास देखो पवित्र आत्मा है तू उठ जा, और इस तरह से एक एक व्यक्ति को उठा लेंगे। Because I'm telling you right now, we already have the deposit. और देखिए हमारे पास अभी से डिपॉजिट दे रखा है। We hold it here and never gone. और हमारे पास है। Do not deny Jesus. यीशु को मना के ना करें, इनकार ना करें। That day we still have this title deed, we have the deposit, and that day he comes that here, there's the title deed, get it, and let's go home. और अगर आपके जीवन के अंदर वो पवित्र आत्मा के रूप में डिपॉजिट खड़ा हुआ है तो उस दिन आपको भी प्रभु अपने पास लेके जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. And one of the function of the shofar is to gather people. शोफार का फूंकने का एक मकसद यह है कि लोगों को इकट्ठा करें। It depends on the sound that you blow the shofar. शोफार से किस तरह का आवाज निकलता है उसी के आधार पर यह होता है। Different sound have different function. अलग-अलग प्रकार का आवाज का अलग-अलग मकसद होता है। So, for example, if you want to gather your people for the battle, अगर युद्ध के लिए अपने लोगों को जमा करना चाहते हैं, you put the sound that you blow, the shofar is different from, for example, you on the day of trumpet, the to blow the trumpet. Okay, to gather people, just have a meeting or you announce something. जब शोफार बजाया जाता है जो युद्ध के लिए और उस तरह का समय जहाँ पे लोगों को ऐसे ही सम्मिलित करना है, दोनों में फर्क होता है। It's a different shofar sound. अलग-अलग शोफार की आवाज निकलता है। From gathering people to fight. युद्ध के लिए अलग है, साधारण सभा के लिए अलग है। Okay, same thing here. Same thing here. At the day of the trumpet, also blowing the shofar to gather people, to gather king's people in front of him. और राजा के सामने उनको सम्मिलित करने के लिए इस दिन में वो शोफार बजाया जाएगा। And for the purpose of judgment. और न्याय दिलाने के लिए। So judgment and kingship are closely linked. और न्याय दिलाना और राजा बनना ये दोनों एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़ा हुआ बातें हैं। Revelation 19 और प्रकाशित वचन 19वें अध्याय में this is the theme that our Lord God reigns. ये यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये है कि हमारा परमेश्वर राज करता है। And it says that now it comes the time that, both small and the great, his servants are going to receive the reward. उनके छोटे और बड़े दास लोग उठेंगे ताकि उनको प्रतिफल मिल जाए। And at that time, as the voice of many waters, उनके आवाज जैसे मानो बहुत से पानी की आवाज के जैसे सुनाई देता है। a mighty thundering saying hallelujah. और ऐसे गूंजने वाले आवाज से जिसमें आता है
हालेलुया। Now I want you to open up your Bible, go to book of Psalm 146 and throughout the 150. और आप भजन संहिता 146 से लेके 150 तक अगर आप देखोगे, You know, these 5 chapters being at the very end of book of Psalm because it is the prophetic shadow of what's coming at the end. ये 5 अध्याय 146 से लेकर 150 तक के आयत प्रभु के आने वाले दिनों का मानो भविष्यवाणी दे रखा है। So you find, you know, these chapters, they always start with praise Jehovah. They means hallelujah. और इसमें अक्सर हमें दिखाई देता है यहोवा का स्तुति करो हालेलुया। And the end with hallelujah also. और वो हर एक भजन हालेलुया के साथ ही समाप्त भी होता है। Those 5 chapters. और ये 5 अध्याय, And even at the end of the last chapter, I mean the last chapter 150. 150वां जो भजन है उसके आखिरी में It said that all who have breath on the earth, in the ocean, under the earth, and everybody who, as long as you breath, not just human, the whales, whatever, you know, they will all sing in a big loud voice, hallelujah. और देखिए आखिरी भजन में ऐसे भी लिखा है जिन के अंदर जीवन का श्वास है, जीवित प्राणी है, वे सब परमेश्वर को इस प्रकार से हालेलुया के साथ स्तुति महिमा करें। And that kind of theme is, you know, will show up in the book of Revelation 19. और 19वें अध्याय प्रकाशित वचन में मानो उसी प्रकार का हर एक जीवित प्राणी उनको महिमा देने वाली बात दिखाई देता है। And the previous chapter I'll show you later. और इसके पिछले अध्याय में भी ऐसे ही है जो मैं बाद में दिखाऊंगा। So how do you know that when we are that day we are gathered in front of the throne? आपको कैसे पता चलेगा कि उस दिन हम उस राजकीय सिंहासन के सामने खड़े हैं? How to praise Him? कैसे उनको आराधना करना है? I tell you, you may want to memorize, you know, Psalm 146 through 150. और मुझे लगता है तब उस दिन ऐसे करने के लिए आपको भजन संहिता 146 से लेकर 150 तक आपको याद रखना बहुत अच्छा होगा। Because the Holy Spirit already wrote it there. क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस भजनों को वहां पे लिखा है। He has prepared it beforehand, like, hey, holy God's people, you know, I know you will be overexcited, you will don't know what to say here. Here are the things that you say. Here are the things you praise. और मुझे लगता है पवित्र आत्मा कह रहे हैं उस दिन जब तुम खड़े होगे तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि क्या बोलना है, इसलिए मैं अभी से देता हूँ यही बातों को तुम्हें वहां पे बोल के प्रभु की स्तुति महिमा करना है। And that's why it's a living oracle. इसीलिए हम परमेश्वर Living oracles. ये परमेश्वर का जीवित भविष्यवाणियां हैं। It's the feast of Jehovah. परमेश्वर का ये पर्व है। And God committed to Israel to observe, to keep. और इसीलिए परमेश्वर ने पर्वों को मनाने के लिए इस्राएलियों को कहा। But it's not just for Israeli people, it's for us also. ये सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए ही नहीं हमारे लिए भी है। For every people, you know, in the God's kingdom. परमेश्वर के राज्य के अंदर जितने लोग हैं। So, you know, year after year when we do this kind of dress rehearsal in the day of trumpet. हर एक सालों में हम जब इस तरह का एक ड्रेस रिहर्सल ये तोड़ी के दिन में जब करते हैं, you know, our spirit is uplifted. हमारे आत्मिक मनुष्य बिल्कुल ऊंचा उठाया जाता है। You know, once again we are fired up. हम एक और बार बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हैं। And we know that it's going to be true that one day this is no longer a rehearsal. और एक दिन हमें पता चल जाएगा ये रिहर्सल नहीं है। And when you see it's becoming, when you see all the signs start to pop out and converging together, you know that, man, maybe this year, maybe next year, this is so near. और इस तरह के अलग-अलग बातें जब एक-एक पूरा होते हुए दिखेंगे तो आपको पता है हमारे प्रभु यीशु के राज्याभिषेक का समय बिल्कुल निकट है। So brother and sister, this is the great thing that we need to learn. और प्रभु के लोगों ये हमारे लिए सीखने वाली एक बहुत बड़ी शिक्षा है। Bible no longer boring. परमेश्वर का वचन अब बोरिंग नहीं है। I imagine like a day of trumpet, we gather together 4
prepare the meal, and we, practice, and we just sing those songs and praise, that the dress rehearsal, and imagining that one day described in book of Revelation chapter 9, we'll be doing the same thing there, but that won't be so, that will be the real event at that time, and we'll look at each other and say, hey, I told you right, I told you right. और हमें मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए, धुरई फूकने वाले दिन के समान ऐसे एकत्रित होके ये सब चीजों को ड्रेस रिहर्सल के रूप में करना चाहिए, ताकि उस दिन जब हम मिलेंगे तब हम एक दूसरे से बोल सकते हैं कि देखो मैंने तुम्हें तभी बोला था। Psalm 47 is known as the Coronation song. भजन संहिता 47 को ये राज्याभिषेक का एक भजन के रूप में लिखा हुआ है। It describes the procedures of crowning the king. और उसके अंदर राज्याभिषेक समारोह का 2 तरीकों के बारे में लिखा हुआ है। Okay, it starts with verse 1 to 4. 1 से 4 आयत तक उसका शुरुआत है। Clap your hands, all you people. सारे लोग ताली बजाएं। Carouse up to the God with his voice of triumph. और आप जय जयकार करें प्रभु परमेश्वर को। And then he is a great king. क्योंकि परमेश्वर ऊंचा महान परमेश्वर है, राजा है। He shall subdue the people under us. वे लोगों को हमारे अधीन करेंगे। And the nations under our feet. राष्ट्रों को हमारे पैरों के नीचे दबा देंगे। So it starts with, the ceremony. We all there, we stand there, we clap our hands and shout it out. और हम ताली बजाते हुए हम चिल्लाते गाएंगे। Okay, then we will see the king walking toward the throne. फिर हम देखेंगे वो सिंहासन की ओर राजा चल के आ रहे हैं। All the thrones of the earth will have the staff to go up. और पृथ्वी के जितने सारे सिंहासन हैं वो इसी तरह के एक सीढ़ी उसके सामने हुआ करता है। Yeah, so so as the king Messiah, when he sit on the throne, there are many steps to go up. और इसी प्रकार से सीढ़ियां मसीहा राजा के सिंहासन के सामने होंगे। Now verse 5 said God is going up with a shout. और इसमें भजन संहिता 47 में लिखा है परमेश्वर ऊंचे में एक पुकार के साथ जाते हुए मैं देख रहा हूँ। It's the sound of a trumpet, taruah. ये तुरही के आवाज के साथ। So people are shouting, celebrating, and the shofar blowing. और लोग खुशी मना रहे हैं और उसी समय शोफार बजाया जा रहा है। At that time, God even make all the ocean roll, tsunami, whatever, to clap their hands. Like ocean, you have to clap your hands, so the tsunami come to clap your hands. और परमेश्वर मानो ये समुद्र को भी आज्ञा देते हैं तुम भी ताली बजाओ। कैसे करते हैं? सुनामी और ये सब के कारण लहरें बजने लगता है। And King Jesus at that time, he was just step by step by step and up higher and higher and higher. They call ascending to his throne. और राजा यीशु मसीह एक एक सीढ़ियों को चढ़ते हुए सिंहासन की ओर जाएंगे। उसको कहते हैं ऊंचे में विराजमान होते हुए चलना। And that's why book of Psalm 89:15 said, blessed are those people who know the joyful song. It's not just know, you can experience the joyful song when it happened. और भजन संहिता 89 में इस प्रकार लिखा है कि वो लोग धन्य हैं जो आनंद के आवाज को पहचानते हैं। Those are the creatures that lie in the dust, in the grave, that hear the shofar, and they go home, right? And then they hear the shofar. That's a joyful sound. और ये शोफार की आवाज है, वो आनंद की आवाज के रूप में बताया हुआ है। मसीह लोग जो प्रभु के इस आवाज को पहचानते हैं वो बहुत आशीषित लोग हैं। These are truly blessed. ये लोग बहुत धन्य लोग हैं। Because they, for example, Daniel, prophet Daniel. जैसे देखिए दानियल भविष्यवक्ता, he will be one of us. वे हमारे संग एक व्यक्ति होंगे। And he will be open up his eyes. और वे अपनी आंखें खोल के देखेगा। And then we will, in the light of and we will start to walk. और हम असलियत में चलने लगेंगे। Imagine 10 men lie down. Right? 10 men always lie down, right? शैतानी शक्तियां मानो गिर के पड़े रहते हैं। Right? And they hear the joyful sound of shofar and get up. Right? जो मरे हुए व्यक्ति हैं वो
लेटे पड़े रहते हैं, लेकिन जो तुरही का आवाज जो सुनेंगे वे खड़े हो जाएंगे, and you get up and you walk. और फिर वे चलने लगेंगे, Right? And what happened is you see Jesus face to face, और यीशु को आमने सामने देखेंगे, and his face is like more brilliant than the shining sun. और उनका चेहरा बिल्कुल इतना तेज से भरे होंगे जैसे मानो उस सूरज के समान। The radiance just like a billion gigawatts of radiation shining out. उनका ज्योति इतना ज्यादा होगा कि देखना भी मुश्किल हो सकता है। But that time we only get our eternal body that's same power, like similar to his body. और उसी समय हमारे लिए भी वही ज्योतिर्मय शरीर मिलेगा जैसे उनका शरीर है। So instead of burning into the ashes, हम उस समय उस ज्योति में हम जलकर राख नहीं होंगे, we are able to see him face to face and walk with him. बल्कि हम उनके चेहरे को देख पाएंगे और उनके ज्योति में हम भी चल पाएंगे, In the light of his countenance. और उनके चेहरे से चमकने वाले ज्योति में। Hallelujah! Now, verse 8 is the highlight of the ceremony. 8वीं आयत उस समारोह का सबसे महत्वपूर्ण समय है। Finally, he gets up to the last step and then he sits upon the throne. राजा ऐसे सीढ़ियों को चढ़ चढ़ के आखिरी सीढ़ी में पहुंच जाते हैं और अपने सिंहासन में बैठ जाते हैं। Now, in verse 9, you can see here that the believers in Yeshua are gathered in his presence and pledge their allegiance. 9वीं आयत में विश्वासी लोग यीशुआ के सामने उनके उपस्थिति में इकट्ठा होकर अपने वफादारी राजा के प्रति बता देते हैं। So the verse 9, the princes of the people are gathered together. और यहाँ पे लिखा है लोगों के बड़े अगुवे लोग एक साथ मिल चुके हैं। Because later on, after displaying the allegiance to the King of Kings, क्योंकि बाद में ये सभी लोग ये राजा के सामने अपने वफादारी को बताया जाता है। after the marriage supper of the Lamb celebration, मेमने के विवाह का जो दावत है उसके बाद the King of the Kings will ride on the white horse. और ये राजाओं का राजा अपने सफेद घोड़े के ऊपर सवार करेगा, and we will be following him too. और हम भी उनके पीछे पीछे बोलेंगे, and the heaven will be torn open, और मानो स्वर्ग ऐसे खोल देंगे, and we all riding on our white horses to behind Jesus is leading the charge. और यीशु मसीह आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे घोड़े में सवार होकर जाएंगे। Now the king is getting ready to take his ownership, his title deed to own the whole earth. और प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है वो अपना जो टाइटल डीड है वो पृथ्वी की ओर लेकर जाने के लिए तैयार हो चुका है, and revenge his enemy, और उनके शत्रुओं के ऊपर बदला लेने के लिए। and we will be wearing the white linen cloth, और हम उस सफेद कपड़े पहन के चल रहे होंगे, and that's described on Book of Revelation chapter 19. और वो 19वीं अध्याय प्रकाशित वचन में लिखा हुआ है। So again in Psalms chapter 47. भजन संहिता 47वीं अध्याय। Here, sing praises to Psalm, sing praise to our King. परमेश्वर को स्तुति करें और राजा को स्तुति करें। And you sing praise with understanding. आप समझदारी के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। So again, what do you sing? क्या दिखाई देता है आपको? Book of Psalms, there are like at least there are 5 chapters. I told you, right? ये लास्ट आखिरी 5 अध्याय के बारे में कह रहा हूँ। And Book of Psalms chapter 47. और 147? 47. 47वीं अध्याय। Yeah, so we shout and sing and what? It says that
with understanding. इधर लिखा है हमें स्तुति और महिमा समझदारी के साथ बातों को जान के करना है। Like we know what's going on, we have been prepared for this for a long time. हमें पता है क्या हो रहा है क्योंकि हम बहुत समय से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। We know exactly what this scripture is describing about. हम जानते हैं वचन क्या सिखा रहे हैं, क्या है उसका मतलब। And we are singing along at this real great event. और हम भी उस बड़े समारोह में प्रभु के लोगों के साथ गा रहे हैं। What a glorious thing. और कितना महिमामय समय है। Well, like I told you before, the good news, there's a bad news. लेकिन जैसे मैंने पहले कहा सुसमाचार के साथ एक बुरा समाचार भी है। And the good news is the bad news will make the good news even better news. बुरा समाचार जो है सुसमाचार को बेहतर समाचार बना देता है। So now the day of trumpet will also start the so-called the Jacob's trouble. ये तुरही फूंकने के साथ साथ याकूब के परेशानियां भी बढ़ जाता है। The time of Jacob's trouble. याकूब के परेशानियों का समय। Why do I say that? मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? Why it will be on the day of trumpet issue first? ये तो तुरही के साथ याकूब का परेशानी कब शुरू हो रहा है? In the Old Testament, there are four of the time of Jacob's trouble. This term. ये जो पद जो है ये पुराने नियम में 4 जगहों में लिखा हुआ है। And it actually corresponds to the book of Revelation, the last 7 years. और प्रकाशित वचन के अनुसार आखिरी 7 सालों के साथ ये बहुत मिलता जुलता है। Okay, so in New Testament we also call the Great Tribulation. नए नियम के अंदर इसको ग्रेट ट्रिबुलेशन बताया जाता है। It will involve a lot of war. ये उसके अंदर बहुत से युद्ध होंगे। And that's why Jesus on Matthew 24 there will be wars and rumors of war. और 24वें अध्याय मत्ती सुसमाचार में लिखा है ऐसे युद्ध होंगे, युद्ध के बारे में ऐसी खबरें आएगा। But he also said that it's just the beginning of the birth pain. और लेकिन वे कहते हैं ये जो जन्म देने का पीड़ा है उसके शुरुआत है। He's not coming at that time yet. उस समय वे अभी तक नहीं आ रहा। And it's also called the day of Jehovah. इसी को यहोवा के दिन के तरीके में भी बताया हुआ है। So very important, remember this is the day of Jehovah. यहोवा का दिन। Then you will not get confused when you read the New Testament at the Lord's day. और तब आप ये परमेश्वर का दिन करके जब पढ़ते हैं तब आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे। Again, it's not Sunday. ये संडे नहीं है। It's the Jehovah's day, the day of Jehovah. यहोवा का दिन है वो। It's talking about the time of Jacob's trouble. ये उन दिनों के बारे में कह रहे जब याकूब के परेशानियों का दिन होंगे। Okay, so Zechariah chapter 9. जकरिया 9वीं अध्याय। Okay, there is talking about the battle here. यहाँ पे एक युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। Remember Zechariah 9:9? Zechariah 9:9, chapter 9. जकरिया 9वीं अध्याय के अंदर behold, the gates of Zion, lift up your gates, behold, your king comes, meek and lowly, riding on the donkey. और उस आयत में ऐसे लिखा हुआ था, ये देखो तुम्हारा राजा नम्र होके दीन होके एक गधे के ऊपर बैठ के आ रहे हैं। That happened on the first coming of Jesus on the night on 10 when he presents himself as the perfect Lamb of God. और ये यीशु मसीह के पहले आगमन के अंदर निसान के महीने में हुआ। But this verse 14 is talking about the future. लेकिन ये 14वीं आयत में भविष्य के बारे में लिखा हुआ है। So the Lord will blow the horn and ride the storm of sound. और इसमें लिखा है प्रभु परमेश्वर ऐसे सिंह पे आवाज बजाएगा और उसके साथ ये अंदर आएंगे। Now this time Jesus is no longer the Lamb.
और इस बार जब प्रभु आ रहे होते हैं तब मेमना नहीं है। Now this time he comes like a lion, और इस समय वो एक सिंह के समान आएगा, ready to revenge his enemy अपने शत्रुओं के ऊपर बदला लेने के लिए तैयार होकर and rescue his people. अपने लोगों को बचाते हुए। And so, and I want you to understand that in the character of our God, Jehovah, and Jesus, King Jesus, हमारे परमेश्वर यहोवा का और यीशु मसीह जो राजा है उनके स्वभाव को आपको पहचानना बहुत जरूरी है। he is a holy warrior. वे बहुत पवित्र एक सैनिक है। When he roars like a lion, the whole forest shake. और जब वो इस सिंह का आवाज गूंजता है पूरा जंगल मानो कांपता है। In the character of God, there's such a fearless fighting will. और परमेश्वर के स्वभाव के अंदर निडर होकर लड़ने वाली एक आत्मिक शक्ति है। Our God is the Lord of the host. हमारा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है। He is like a David. He will never lose the battle. वो दाऊद के समान है, एक भी लड़ाई वो हारते नहीं है। And at David's time, when he told David when to destroy his enemy, दाऊद के समय में जब एक शत्रु के ऊपर हमला करना होता है, he even told David that, hey, you are a little bit too slow. I'm going ahead of you. और परमेश्वर ने एक बार दाऊद को बोला, दाऊद तुम थोड़ा सा धीमी हो, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। When you hear my step, the sound of my steps on the leaf of the tree, that's me. I am running on the leaf ahead of you to strike the enemy already. और जब तुम जा रहे होंगे तुम्हारे ऊपर मेरे इस पत्तों को हिलते हुए तुम आवाज को सुनोगे, समझ लेना मैं तेरे आगे आगे मेरे सेना को ले जा रहा हूँ। This is how powerful, how awesome our God is. इतना सामर्थ्य और इतना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। And so I would say that he is the true marine. और मैं आपको कहना चाहता हूँ वो एक सच्चा मरीन है। First to fight. वो देखो पहले युद्ध करने के लिए उतरता है। And so that chapter of that verse said he also blow the shofar for battle. और वो तुरई को फूंकते हैं, लड़ाई में उतर जाओ। Okay, now Revelation 1:10. This is John in the island of Patmos. ये देखिए प्रकाशित वचन 1:10 में वो परमेश्वर के दिन के अंदर I was in the spirit, and then the Holy Spirit taken to the day of Jehovah. मैं प्रभु के दिन में आत्मा के द्वारा उठाया गया To the last 7 years time space. और ये उस 7 साल की ओर मुझे लेके गया। And again behind him there's a great voice, and that voice already sounds like shofar. और मैंने अपने पीछे ऐसे एक महान आवाज को सुना, उस तुरई फूंकने के समान उसका आवाज था। And that's why I believe that in 2 Thessalonians, that Paul said that when Jesus descended in the middle of the earth with the shofar, with the trumpet of God, I believe that is his voice, because the voice sounds like shofar. और देखो ये दूसरे थिस्सलुनीयों में लिखा है वो तुरई फूंकने के बीच में प्रभु उतर आएगा। मुझे लगता है वो प्रभु का खुद का आवाज है, वो शोफार के समान जो सुनाई देता है। And he himself, you will call your name, get out, we're going home, I'm taking you home. और बेखुद तुम्हारे नाम से पुकार के कहेंगे उठो हम घर चलते हैं। Zephaniah chapter 1, the great day of the Lord. जफनिया उसके पहले अध्याय 14वीं आयत में परमेश्वर का महान दिन है। Things will happen very fast. ये बहुत जल्द हो जाता है। Just like I shared with you the 3 feasts in the fall, it all happened within 22 days from start to finish. और देखिए स्प्रिंग टाइम बारिश के समय में जो 3 पर्व होता है वो 21 दिन में एक के बाद एक खत्म हो जाता है। So it is a prophetic shadow how things once it start, it will finish quick. अंत के दिन के बातें एक अगर शुरू हो गया तो बाकी सारे तुरंत एक के बाद एक खत्म हो जाएगा। That is the true meaning of suddenly. और वही सडनली या तुरंत करके जो शब्द है उसका मतलब है Suddenly does not mean all of a sudden out of nowhere. That is not that meaning.
Suddenly it's not like an accident. How all of a sudden without knowing why it just happened. और एकदम या तुरंत हो गया करके जो वचन बाइबल में अक्सर दिखाई देता है, उसका मतलब असलियत में ये है, ये नहीं है कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ तुरंत हो गया, वो नहीं. Certainly means there are so many things God will accomplish within the 7 years, and He's holding all these events to make sure it all happened within the 7 years window. ये सडनली करके जो शब्द इस्तेमाल किया, उसका मतलब है कि ये 7 साल के अंदर एक के बाद एक ये घटनाएं होने लगेगा. So when the moment He released the end time clock of the book of Daniel's 70 times 7, the last 7 end time clock start to tick, that moment, everything. जैसे दानियल के किताब में लिखा है, वो आखिरी दिनों का वो घड़ी जब चलना शुरू होगी, वो एकदम एक के बाद एक करना शुरू करेंगे. According to the book of Daniel chapter 9, दानियल के किताब 9वीं अध्याय के अनुसार 7 times 7 already passed. 62 times 7 also passed. So 7 plus 62 is 69. 69 times 7 already passed. देखिएगा 7 गुना 7 और 7 गुना 62 ये दोनों निकल चुका है, यानी 69 बार का जो नंबर है वो ऑलरेडी निकल चुका है. Because Messiah is cut off after the 69/7. क्योंकि मसीहा का अंत मृत्यु वो 69 बार 7 जब हो गया तब हुआ था. So the day that Jesus got on the cross, that already finished up 69 times 7. यीशु मसीह का मृत्यु जब यरूशलेम में 2000 साल पहले हुआ था, तब 69 बार 7 गुना जो है हो चुका है. And there's only 1 7 left. अभी सिर्फ एक 7 बचा हुआ है. What happened is God freeze the end clock. और देखिए परमेश्वर ने अंत के दिन का जो घड़ी को मानो ऐसे फ्रीज कर दिया है. And that freeze of the end clock gives us 2000 years. और देखो अब ये 2000 साल हुआ है, इतने टाइम में वो 7 साल का ही समय चल रहा है. But it's getting so near. और लेकिन ये बिल्कुल निकट आ रहा है. I told you that the spring feast is because hold on. Okay, the fall spring feast is concerning His first coming. और ये देखिएगा 4 शुरुआत का जो 4 पर्व है वो यीशु मसीह के आगमन तक का दिखाता है. And the first fruits represent 2 different resurrections. पहले फूलियों का पर्व 2 अलग-अलग पुनरुत्थान को दिखाता है. Jesus rise up, resurrected on the first fruit. यीशु मसीह का पुनरुत्थान वो पहले फूलियों के पर्व के साथ दिखाया है. 2000 years later, not 2000, almost 2000 years later, Israel resurrected once again, become a nation on the day of Pentecost. That is also the first fruit offering. और करीब 2000 साल के बाद इस्राएल एक देश के रूप में 1948 में उनका पुनरुत्थान हुआ, वो भी मानो उसी पहली फूली के पर्व के साथ जुड़ा हुआ है. That fulfilled the Ezekiel's when God said, prophesy over those dry bones, remember? और यहेजकेल का जो भविष्यवाणी है, इन सूखे हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करो, वो उसके साथ पूरा हुआ है. Ezekiel 38, 37, 38, I shared with you yesterday. मैंने कल आपको बताया था. Right, and once again these dry bones connect together, become a nation. ये सूखे हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ गया और एक देश बन गया, एक सेना बन गया. And resurrected, और वो पुनरुत्थित हुए, become a nation life. ये एक देश बन गया. So we are already at the, so the prophetic fulfillment of this Pentecost, about Jesus' first coming is fully fulfilled already, right? यीशु मसीह का जो आगमन के द्वारा पहले बात तो अभी ऑलरेडी वो पूरा हो चुका है. So spring is over and now summer is coming. वसंत ऋतु ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब गर्मी का समय है.
And that's why Jesus, when you see the fig tree starting to tender, starting at the green leaf, you know that summer is coming. And when you know summer is coming, the fall is very nearby. यीशु ने इस प्रकार इसको कहा, जब तुम अंजीर के पत्तों को आते हुए देखोगे, तुम्हें पता चलना चाहिए गर्मी का समय आ गया है। अगर गर्मी का समय है तो तुम्हें यह भी समझना है कि बारिश भी बहुत जल्द आएंगे। Let me tell you, we are very close to the end of the summer now. मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम गर्मी के समय का मानो बिल्कुल समाप्ति पर पहुंचा है। Because from 1948 till now, we have already 70 years of summer passed by. देखिएगा, ये 48वें साल से लेकर 1948 से लेकर अब तक 70 साल ऑलरेडी पूरा हो चुका है, जो मुझे लगता है गर्मी का समय था। So very soon the season of summer will be over, and we will be all of a sudden go into the season. मान लीजिए गर्मी का समय था, ये एकदम खत्म हो जाएगा, तुरंत बारिश का समय शुरू हो जाता है। And then that's when God unfrees the clock of the last 7 of Daniel's end-time clock. और उसी समय के अंदर दानियल के किताब के अनुसार तो वो 7 साल का वो समय। So that's what you see here, the great days of Jehovah. और वही बात आप ज़ेफनिया के किताब में परमेश्वर का वो बड़ा दिन को दिखाया हुआ है। Prophet Zephaniah, he was taking again, he was like John, he was taking by the Holy Spirit into that 7 years time space of Jacob's troubles time. ज़ेफनिया को भी यूहन्ना के जैसे उस 7 साल का वो खास समय की ओर उनको भी उठा दिया गया। So he cried out, it's near, it's near, it's near. वे कहते हैं वो दिन निकट है। And hasten greatly. और वो बहुत जल्दी में आ रहा है। Hasten greatly means that everything happens so fast. वो बहुत जल्दी में आ रहा, मतलब बहुत ही तुरंत सब कुछ हो जाएगा। And when it starts to happen, it starts to pick up the space and accelerate. जैसे वो शुरू हो जाता है, उसका रफ्तार कहीं गुना ज्यादा वो बढ़ने लगता है। And become even faster. और रफ्तार बढ़ते ही जाता है उसका। And then the voice of the day of the Jehovah, the mighty man shall cry there bitterly. और पराक्रमी आदमी के समान उसकी आवाज निकल आएगा। So the day of wrath, the day of trouble, distress, wasteness, desolation, darkness, and gloomness, and the day of cloud and thick darkness. This is and also a day of shofar, trumpet. But this time, this shofar is alarm, blow the alarm against the city, against the high towers. You know, the enemy is coming. वह दिन क्रोध का दिन है, परेशानी और संकट का दिन है, और वीरानी का दिन है, अंधकार का और निराशा का दिन है। और उस दिन में इस तरीके से तुरई फूका जाएगा। Horrible wars from all sides are coming. Enemies are from all sides attacking. और देखिए, शत्रु हरेक तरह का शत्रु हरेक दिशाओं से आ रहा है। This speaks for the future event. You know, the Israel will have to face. ये उन भविष्य के दिनों को दिखाता है जब इस्राएल के विरोध में शत्रु सेना आएगा। That's why, you know, that's why Bible said pray for the peace of Jerusalem. इसलिए बाइबल आपको कहते हैं इस्राएल के शांति के लिए प्रार्थना करें। You don't stop your prayer for Jerusalem. आप इस्राएल के लिए प्रार्थना करना है। And God said, I will not stop on my work to protect Jerusalem either. और मैं अपने वचन को पूरा करने से मैं रोकूंगा नहीं, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। But I want to hear the prayers from my people who are watching for Jerusalem pray. और मैं अपने लोगों को ये बताता हूँ वो इस्राएल के लिए प्रार्थना करें। I will extend my mighty right hand to rescue them. मैं उनको बचाने के लिए अपने दाएं हाथ दिखाऊंगा। And Jerusalem will be exalted as the most praised city in the entire world. और पूरे विश्व भर के अंदर इस्राएल को मैं एक स्तुति का कारण बनाऊंगा। And after that I will come back and set my throne in Jerusalem and rule the whole world. और फिर मैं आकर इस्राएल यरूशलेम को ये इतना महान जगह बना दूंगा। Book of Joel chapter 2. योवेल के किताब दूसरे अध्याय। Now this is another prophet. ये एक और भविष्यवक्ता है। Again he was taken into the day of Jehovah time space. यहोवा के दिन की ओर उसको भी उठा के दिखाया गया। He saw that the urgency. और वो बहुत जल्द
and sound the alarm, the holy mountain. सिय्योन में तुरही बजाओ और पवित्र पर्वत में एक आवाज को करो. Okay, because the day of your fall comes is very ahead, almost like now. देश के सभी निवासियों के ऊपर वो आ रहा है. What he saw very similar to Zephaniah, a day of darkness, gloomness, a cloud of darkness, thick darkness. वो दिन है जैसे जफनिया ने देखा उसी प्रकार का अंधकार का और दुख का एक बादलों का एक समय दिखाया है. And then, but he add one more details here. और इसमें लेकिन एक और विवरण दिया हुआ है. As the morning spread upon the mountains, जैसे सुबह पहाड़ों के ऊपर फैलता है. pay 100% attention to this key verse. ये के ऊपर पूरा ध्यान दीजिएगा. Even 200% of your attention to this आपका verse. ध्यान का 200% भी आप इधर दे दीजिए. I'm about to unveil a mystery to you. मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण एक भेद के बात दिखाऊंगा. We are living in such a time that the mystery of this verse is unlocked. क्योंकि हमारे इस समय के अंदर इस आयत का भेद खुलासा हो रहा है. The unlocking of this mystery is already the proof that we are so near to the day of Jehovah. इस आयत का पूर्ति अभी होने का मतलब है कि हम उस तुरही फूंकने के समय का बिल्कुल निकट है. These prophets, they always talk about the day of darkness and gloomness, right? ये सारे भविष्यवक्ताएं ऐसे दिन के बारे में बोलते हैं जहाँ पे अंधकार है, निराशा है और ये सब चीजें हैं. And the days of a lot of clouds and of thick darkness. और उसके साथ साथ बहुत से घने बादल और अंधेर के बारे में भी लिखा हुआ है. That is the common theme that is seen. और वही बात आपको अक्सर पढ़ने के लिए मिलता है. But Joel said, morning spread upon the mountain. लेकिन योवेल नबी कहते हैं जैसे सुबह पहाड़ों के ऊपर फैलता है. What is going on here? यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? How can you have so much darkness and the cloud, the thick cloud and the glooming, and in the meantime there's a theme that he saw like a morning, like a morning spread among the mountains. They're so bright. लेकिन देखिएगा यहाँ पे बहुत से अंधकार और बादल, घने बादल, इन सबों के बीच में ऐसे लिखा है सुबह के जैसे रोशनी दिख रहा है. And like the sunrise, and shine all his rays on the mountain to lighten up the mountain. But in the meantime, the background, everything else in the background is so dark. देखिए पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में पूरा अंधकार है और सब कुछ है, लेकिन सूर्योदय के समान रोशनी निकलते हुए भी इधर दिखा रहे हैं. And the sky even have a lot of thick clouds. और ये आसमान में भी बहुत से घने बादल दिख रहा है. No one 100 years ago, no one will understand this verse. 100 साल पहले कोई भी आयत को शायद समझ नहीं पा रहे थे. This, it says. ये है वो. Take a look. This is it. देखिए यही है वो चीज. Thick darkness. घना अंधकार है. Gloomy day. निराशा का दिन है. Well, it's like the morning light, morning sun that shine upon the mountain. लेकिन देखो एक सुबह का जो रोशनी पहाड़ के ऊपर फैलता है वैसे एक नजारा इधर दिख रहा है. Which the current world event is going. This is approaching soon. जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये घटना भी बहुत जल्द होने वाला है. President Donald Trump, he already want to terminate that treaty with Russia. रशिया के साथ जो एक ट्रीटी बना हुआ था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कैंसिल कर दिया. Because he said Russia is still secretly developing the short term and the mid range, short range and mid range nuclear warhead. क्योंकि रशिया उनके हिसाब से लंबे दूरी का और छोटे दूरी का मिसाइल बना रहे हैं. And in the meantime, China is now in the due
treaty, so they are doing it all the time now. तो चाइना तो इस ट्रीटी में था भी नहीं, इसका मतलब ये सब देश अपने अपने जगहों में इस चीजों को बना रहे थे. So, but only United States is like an honorable gentleman signed the agreement. Okay, we're gonna do it. और सिर्फ अमेरिका ऐसे कर रहे हैं कि ये सब ट्रीटी के वजह से हम नहीं करेंगे. So Russia is secretly developing them. रशिया रहस्य में वो बना रहे हैं. China is openly developing them. और चाइना खुलेआम वो बना रहे हैं इस चीज को. And what about India? I don't know. इंडिया के बारे में क्या है? So the whole world is going crazy now. और पूरे भारत के अंदर तो ये बढ़ी रहा है, पूरे देश के अंदर ये बढ़ रहा है. Pakistan join the club. और इंडिया पाकिस्तान ये सभी लोग ये कर रहे हैं. And what about the agreement that President Obama made with Iran? और ईरान के साथ प्रेसिडेंट ओबामा ने जो ट्रीटी बनाए थे उसका क्या है? So that Russia is secretly helping Iran to develop that. और रशिया रहस्यमय रूप में ईरान को मदद कर रहे हैं वैसे ही बनाने के लिए. And what about North Korea, Kim Jong-un? और ये नॉर्थ कोरिया का क्या हाल है? They are all developing it. ये सभी लोग इसी तरह का न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहे हैं. So just by watching the current world even unfold in front of your eyes, and you look, you study the scripture, you compare them, you know what timeline we are in right now. और देखिए दुनिया भर में जो घटनाएं हो रहे हैं और वचन में जो लिखा है हमें समझ में आता है, हम बहुत निकट हैं. The Great Tribulation is in the theme that a woman is about to deliver the baby in the travail. और ग्रेट ट्रिबुलेशन या बड़ा सताव ऐसा एक बात है जो एक जन्म देने वाले पीड़ा में जैसे एक स्त्री है. I never had the opportunity to deliver a baby myself. और मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि मैं एक बच्चे को जन्म दूं. But I think sisters who have been mother now should have identify to this kind of experience. और इस तरह के बात को एक स्त्री या एक माँ उस बात को समझ सकती है. Number one, there's no more delay. पहली बात यह है कि अब और देरी नहीं है. When the time due to deliver suddenly happen. और जब बच्चे को जन्म देने का समय आता है तुरंत वो काम हो जाता है. Once the travail starts to happen, that's the time to give the birth, deliver the baby, and the travail once it starts, it become more and more frequently and increase the pain of travail. देखिए जन्म देने का वो जो पीड़ा जब शुरू हो जाता है वो प्रक्रिया ऐसे बढ़ते रहता है, वो दर्द बढ़ते जाता है. And so no one can escape out of that experience. I mean, the woman, once you are in travail in the pain, you cannot say stop it. एक स्त्री जब एक बच्चे को जन्म देने के पीड़ा में है वो ये नहीं बोल सकती इसको रोक दो वो रुक नहीं सकता फिर. And so is the kingdom of God. इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य भी है. It's getting so close to be delivered on earth also. वो पृथ्वी के अंदर प्रभु के राज्य प्रकट होने के लिए बहुत जल्दी में बढ़ रहा है. Those persecution time is the birth pain of the kingdom of God to be our birth. God coming back to ride and the kingdom of God on earth physically. ये सदाओं का समय ऐसा है कि परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह का राज्य तो पृथ्वी के ऊपर प्रकट होने के लिए निकट जल्दी आ रहा है. It's a due process. ये ऐसा होने वाला एक बात है. And that's why Jesus said that this is a birth, like a birth pain. A woman once is after the birth pain saw the child. जब एक स्त्री का जन्म देने का प्रक्रिया चलता है पहले दर्द होता है फिर बच्चे का चेहरे को देखती है. And the mother will look at the child filled with joy and forgot about all the birth pain. जब एक माँ अपने बच्चे का चेहरे को देखती है तो अपने पुराने अपना जो दर्द हुआ था पीड़ा हुआ था वो सब भूल जाती है. Same thing, when we go through that process, जब उसी प्रकार हम भी इस तरह के पीड़ा से होके जब गुजरते हैं it's only temporary. ये सब बिल्कुल कुछ ही समय के लिए है. Once it starts, it will be finished very quick. एक बार शुरू हो गया तो वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा. No more than 7 years. 7 साल से ज्यादा नहीं होंगे. Once the Antichrist showed up in the middle of the 7th year, then
the greatest persecution stop, but it's not going to be more than 3.5 years. और देखिए उसके मिडिल समय जब आता है सबसे ज्यादा सताव होंगे, लेकिन वो 3.5 साल के ऊपर वो भी नहीं The जाएगा। enemy tries so hard. He knows that God is coming back to take his throne in Jerusalem, and he's waiting for his people to say, "Blessed is the one who comes in the name of Jehovah." और शत्रु को भी पता है यीशु मसीह राज के सिंहासन लेने के लिए आ रहा है, और प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि हमारे अपने लोगों को ये बोलने के लिए परमेश्वर के नाम में जो आता है वो धन्य है। And that's why devil said, "This is it. We got to destroy the entire Israel." और तब शत्रु शैतान ये बोलेंगे हमें ये जरूरी है, बहुत जल्द पूरे इस्राएल को खत्म करना पड़ेगा, So that no one will say, "Blessed is the one in the name of Jehovah." ताकि कोई ये ना बोले कि परमेश्वर के नाम में आने वाला बहुत धन्य है। Okay, so that's why at that time Jesus said, whoever give a drink, whoever give a clothes to the little one to my brothers. इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं इनमें से छोटों को एक कपड़ा या कोई भी सहायता तुम करते हुए हैं वो सबसे आशीषित होंगे। And that specific time space is talking about his Jewish brothers who believe in Jesus Yeshua. ये उसी समय के बारे में है जब यहूदियों के ऊपर इस तरह का सताव हो रहे होंगे यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण। They will face the double persecution. वो सबसे ज्यादा सताव को अनुभव करेंगे। Because today in Israel, if you believe in Jesus, you get persecution. आज के समय में भी अगर यीशु के ऊपर विश्वास करोगे तो यरूशलेम में आपके ऊपर सताव हो सकता है। By their own people already. और उन्हीं के लोगों के तरफ से। And then Antichrist come and persecute you because he want you to die. जब ख्रिस्त विरोधी होंगे आएंगे तो ये बात और भी ज्यादा होने लगेगा। If these terrorists, they have only one bully left, और उनके पास बस एक ही बात बचेगा, they will not waste that bully on anyone else. They must identify who is the Jewish Messianic Jews who believe Jesus is the Messiah. I want to use my bully on that person. और अगर एक बुलेट भी अगर बचा है वो ये सोचेंगे जो व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला यहूदी है उसी के ऊपर मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा। And that is a great and that's why Jesus said that at that time, if even you just give a cup of water to my little brother like that, I will never forget you. I will give you the reward. Even so, you said that, Lord, it's only a cup of drink. And Jesus said, no, I'm going to give you big reward because you listen to my command. You follow my instruction because that speak to my heart. I feel that. इसीलिए यीशु ने कहा अगर इनमें से छोटों को उस तरह के सताव और परेशानी के समय में थोड़ा सा पानी भी तुम पिलाएंगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा, भूलूंगा नहीं। Brothers and sisters, once again we are living in the prophetic time that book of rules is shadowing. और प्रभु के लोगों हम इस तरह के भविष्यवाणियों का खुलासा होने वाले समय में जी रहे हैं। This is real now. ये बिल्कुल सच बात है। We should be the Ruth who loved Naomi, which is Israel. हम रूथ के समान होना चाहिए जो नाओमी से प्यार करते थे, वो आज के समय में इस्राएल को दर्शाता है। And he served Israel wholeheartedly. और रूथ नाओमी का सेवा पूरे दिल से किया। And but in the meantime, Naomi also blessed Ruth tremendously. और नाओमी भी रूथ को बहुत ज्यादा आशीष दिया। With the deep knowledge of Messiah. और ये मसीहा के प्रति एक बहुत प्यार को दिखाता है। That's how Ruth are able to get in such an intimacy with Boaz, which is the foreshadow of the King Messiah. और इसी के वजह से रूथ को बोआज के साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ता मिला और वो हमारे समय को दिखाता है। And be an important part of God's kingdom. परमेश्वर के राज्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई। So after this birth pain, then we see kingdom of Jesus on earth.
इस प्रसव पीड़ा के बाद हमें दिखाई देता है यीशु मसीह का राज्य पृथ्वी में आ रहा है। The newborn baby, the kingdom is born. देखिए वो ना बच्चा जन्म लिया है, वो परमेश्वर का राज्य पृथ्वी में प्रकट हुआ है। And we look at each other, और हम एक दूसरे से देखेंगे, we say, wow. It's awesome. And like, yeah, and they said, you said, okay, hey, Brother Paul, at that time, my head got cut off, you know. आप बोलेंगे हे भाई पॉल, उस समय मेरा सर भी काटा गया था। And said, hey, Brother Paul, you know, they crucified me on the cross, on the wooden cross in Iraq, you know. और कोई बोलेंगे हे भाई पॉल, मुझे वो लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया था इराक में। And we were looking at each other like, और हम दोनों एक दूसरे को ऐसे मिल जुलेंगे। yeah, I was like, wow, that's awesome, right? तब हम बोलेंगे ये तो बहुत बढ़िया बात हुआ। Yeah, like, who cares? अब हमें उस तरह के परेशानियों के सोच के हम घबराएंगे नहीं। And at the time we listened to Apostle Paul. तब हम प्रेरित पौलुस को सुनेंगे। Apostle Paul said, man, you know, they tried to destroy those big stones on me and I was dead. और प्रेरित पौलुस आपको बोलेंगे भाई मुझे तो ये लोग पथराव कर रहे थे, मैंने सोचा मैं डर गया, मैं मर गया। And they threw me outside of the city. और वो लोग मुझे शहर के बाहर भी कर दिए थे। And then I got up. हाँ, लेकिन मैं तब उठ के आ गया। Right, and I kept preaching the gospel. फिर मैं वचन प्रचार करते गया। Right, and my ship wrecked. और एक बार ऐसा हुआ कि मेरा जहाज टूट गया। And I had to swim one night. और मैं रात तैरते गया मैं। Oh, and finally, thank God, I got onto the island. और फिर मैं वो द्वीप में मैं पहुंच गया। And I was just trying to help. I pick up the dry wood. और put it to the fire. उसके बाद मैं वो लकड़ी को वो आग में डालने ही वाला था। When those islanders come and receive us and help us and put out the fire pile. और वो द्वीप के लोग हमारे पास आए हुए थे, वो आग जलाने के लिए हमें मदद कर रहे थे। Man, who knows this poison snake came out of the wood and bite me. ए भाई तब किसको पता था ऐसे एक सांप उसके अंदर है, और वो लकड़ी लेते हुए वो सांप मेरे हाथ में लिपट गया। Right, and then all these islanders watching at me said, man, he's going to drop dead right in front of us right now. तो आपको पता है वो द्वीप के लोग बोलने लगे ये तो बहुत बड़ा पापी था, इसको अभी भी मारने के लिए वो आया हुआ है। But I throw the snake into the fire and barbecue the snake. और भाई आपको पता है मैंने वो सांप को वो आग में डाल दिया, वो बारबेक्यू बन गया। Yeah. So and then he was saying, and all of us are like, wow. तो हम सभी लोग ऐसे बैठ के सुन रहे होंगे, हम बोलेंगे वाओ, What a testimony. वो कितना बढ़िया गवाही है भाई ये। Okay, so do you want to have testimonies of your own? और अगर आपका अपना गवाही अगर होना चाहिए तो just like a Pastor Jack said that we don't test that there's no testimony. और जैसे पास्टर जैक ने बोला एक टेस्ट के बिना कोई टेस्टिमनी हो ही नहीं सकता। Okay, that is the reason why this bad news will make the good news even better news. इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये जो बुरी खबर है आपके लिए वो समाचार बन जाएगा और बेहतर समाचार हो जाएगा वो। Okay, book of Daniel, chapter 12. दानियल की किताब 12वें अध्याय। Actually, this is the first time it's mentioned the time of trouble. ये परेशानी का समय है। And such a never has since at Daniel's time and also to that same time. That means, this is the greatest tribulation ever since in the human history. जैसे कभी उनके समय में या और कभी नहीं हुआ हो ऐसा एक समय दिखा रहा है। And so, if everyone that shall be found written in the book shall be saved. और जो लोग जिनका नाम वो किताब में लिखा गया है वे छुटकारा पाएंगे। What book is he talking about? कौन सी किताब के बारे में कह रहे हैं? That's the book of life. वो जीवन के पुस्तिका के बारे में कह रहे हैं। Okay, so this is the
where we get the word the great tribulation from. इसी जगह से हमें वो शब्द मिलता है जिसको कहते हैं ग्रेट ट्रिबुलेशन। And Jesus at Matthew chapter 24, he personally defined what is great tribulation. और मत्ती 24वें अध्याय में यीशु मसीह खुद ये ग्रेट ट्रिबुलेशन के बारे में, बड़ा सताव के बारे में बहुत से विवरण देते हैं। Because he said that when you saw the Antichrist standing, in the Holy Land and proclaiming that he is God, at that time you got to get out because there will be the disaster that persecution never happened since mankind. और यीशु ने 24वें अध्याय में कहा, जब तुम इस्राएल मंदिर के अंदर देखोगे ख्रिस्त विरोधी अपने आप को परमेश्वर के रूप में दिखा रहे हैं, तब तुम्हें इस माहौल से निकल के अपने आप को बचाव करके भागना है। And the Antichrist is and Jesus said that's the one that prophet the Daniel talked about. और दानियल के द्वारा भी यही बातें बोला गया है। And that's here. वो इधर लिखा हुआ है। That's why all together we see different prophets that Zephaniah, they all talk about the same theme. अलग-अलग भविष्यवक्ताएं देखो यही बात को बोलते जा रहे हैं। Matthew 24, Jesus said that will be like the beginning of the birth pain. और मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय में मसीह यीशु कहते हैं वो प्रसव पीड़ा का शुरुआत का दुख के समान होंगे। English translated as sorrows. इंग्लिश में उसको दुख का शब्द दिया हुआ है, sorrow। Greek is odin. और ग्रीक यूनानी में ओडीन करके आवाज है। Odin is a pain, especially of childbirth. और ओडीन का मतलब है वो दर्द जो प्रसव पीड़ा के साथ जोड़ के बोलते हैं। Okay, brothers and sisters, now it comes to your tea time, chai time, right? Okay, 5 minutes, but I got a lot more to go, okay? So if you can take your tea and just come back and we'll keep going.